ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان اپنے امیج کی اور گرومنگ کا تو ہر کوئی خیال رکھتا ہے, لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ اس فیلڈ سے منسلک ہیں یو کین ایکچولی گو پلیسز, اور یہ کافی پروفیشنل فیلڈ ہے. عام طور پہ لوگ یہ تصور کرتے تھے کہ خواتین بننا سنورنا چاہتی ہیں اور جن کو زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے وہ سیلون کھول لیتے ہیں, بٹ اٹس اے کمپلیٹ سائنس اینڈ اٹس اے ویری ویری ڈگنیفائڈ اینڈ اس طرح کا پروفیشن ہے جس میں آپ کو باقی پروفیشنز کی طرح بار بار اپنی اسکلس کو مزید نکھارنا پڑتا ہے لرننگ اور ایجوکیشن کے تھرو. آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں اس خطے کی ایک بہت ہی مایہ ناز اسٹائلسٹ سے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر رول ایز اے اسٹائلنگ ایجوکیشنسٹ از ویری امپورٹنٹ. ان کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ شی از ویری ویل نون ان دی ایشین اینڈ اسپیسیفکلی ہر اون ہوم کنٹری سری لنکن ریجن, اور ان کی بہت زیادہ خدمات رہی ہیں ہیئر اینڈ بیوٹی انڈسٹری کے لیے. ہیئر اسٹائلسٹ ہیں, بیوٹیشنسٹ ہیں اور خاص طور پہ ایک فیمیل انٹرپرینور بھی ہیں. سکسیسفلی اپنے آپریشنز کو رن کر رہی ہیں آل اکراس سری لنکا اینڈ انڈیا. اس کے علاوہ ایک IHB اکیڈمی جو کہ دنیا کے کریڈیٹڈ آپ کو گرومنگ پروگرامز آفر کرتی ہے. اگر آپ اپنی فیلڈ میں ماہر بننا چاہتے ہیں, پہلے سیکھنا چاہتے ہیں اس کرافٹ کو, تو ان کی انسٹیٹیوشن یہ بھی آپ کو یہ بیوٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرتی ہے. اس کے علاوہ شری لنکا, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں اپنی اس اکیڈمی کو رن کر رہی ہیں. دس از کالڈ دی امیج کنسلٹنٹس. اس کے علاوہ پوری دنیا میں جو ورلڈ فیڈریشن آف ہیئر ڈریسرز ہے اس کی بورڈ ممبر بھی رہ چکی ہیں, اور پچھلے 15 سال سے ان کی بہت ہی نمایاں کارکردگی اور کنٹریبیوشنز رہی ہیں. آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں نیانا کرونا رتنے سے. شی از فرام شری لنکا, شی از وزٹنگ پاکستان. فار ہر کنوینئنس دس conversation will be in English. Good morning, Nayana. I'm so glad to have you here in Pakistan. Happy to be here, very happy to be here. So Nayana, I believe that you visit quite often, and it's been a long partnership and association with the PABA, which is the Pakistan Beauty and Hairdressers Association, particularly agar isko kehte hain hum the Professional Hairdressers and Beauty Association of Pakistan. So how has your experience has been with them in all these years and months? Very good, actually. My first association with PABA was in 1996. We invited them to take part in Hair Asia Pacific international competitions. For 10 years they took part, and they did very well. Pakistan won, and many awards, and the industry is very good. It's got nice people, but unfortunately I always complain, the rest of the world, they don't know what Pakistan has, what the Pakistan beauty industry is, and how good the Pakistani people are. So I think that's a problem, but right. It's a fantastic experience. Very very nice people, and it's a good partnership. So over the years you must have trained hundreds and thousands of young female entrepreneurs who want to be professional beauticians and hairdressers. How has the field evolved across the region? If you look at the countries like Bangladesh, India, Sri Lanka and Pakistan, how do you think the industry has flourished? See, industry has flourished. There's no question about it, because the personal care industry in the world is at the moment over $1 billion. So it's a very, very flourishing industry. But we have a problem, this region, because we don't have good foundation education. Our people are flourishing with the little knowledge they have, and they get expert knowledge halfway through without the foundation knowledge. And this was very evident to us, because I am part of the World Federation, and I see, apart from Japan and Korea, which is Asia, Japan, Korea and few other countries, we the Asians don't have the foundation education that is offered in other countries. So that is why we are committed to education, where we have introduced this IHB, the IHB Institute of Hairdressers and Beautician. It's an institute. Absolutely. Which gives education, and our trainers are World Federation trainers. But Nayana, there is a problem in that. I absolutely believe that in order to qualify, in order to upskill yourself, you must attend these courses and go to a professional institute. But do you feel that technology has been a game changer? We see so many artists who are right now self-taught, and they try to Google, or they try to look at the internet as their extended resource. They look at the resources, they try to self-teach themselves. How do you think that has changed the industry? It has a good and the bad. So again, I take a very simple example. So first of all, you have to know to cook rice.
If you have to know how to wash and how much water to keep and boil the rice without making it soggy or without having it undercooked. Then beyond that is all the biryanis and the fried rice are our choices. Yes. I make it a little differently, you make it a little differently, but both are tasty. So if you don't know to boil the rice, so it's of no use. So the internet is good, but you need the foundation education to understand where you are going. And our forte is that we give it in your local language. Right. And we are 80% in case you practical have a oriented. language barrier, you're absolutely right in pointing out. बल्कि ये बात मैं उर्दू में भी अपने नाज़रीन को कहना चाहूंगी कि आम तौर पे अगर आपको लगे कि आप इंटरनेट पे ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं, रिसोर्सेज देख रहे हैं हेयर एंड ब्यूटी के, लेकिन आपको जबान समझ में नहीं आ रही है, द गुड पार्ट अबाउट दीज इंस्टीट्यूशंस, या अगर आप पाकिस्तान प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर्स एंड ब्यूटी एसोसिएशंस के साथ एफिलिएट करते हैं कि आपको अपनी जबान में सिखाने वाले मिल जाएंगे. वैसे आपको बताती चलूं कि हमारे साथ इस वक्त फराह जावेद साहिबा भी मौजूद हैं. शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ द प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर्स एसोसिएशन फाबा. ये भी इस इंडस्ट्री से पिछले 22 साल से मुंसलिक है. इनको भी वेलकम करना चाहेंगे इन द शो. अस्सलाम वालेकुम फराह, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. फराह जी, जो अभी हम नयाना से भी बात कर रहे थे, आप क्या समझती हैं कि कोविड में खास तौर पे हमने देखा कि जो ब्यूटी सैलून्स एंड पार्लर्स थे वो बहुत अफेक्ट हुए हैं. अब जब चीजें दोबारा खुलने लगी हैं तो क्या एसओपीज को सही तरह से फॉलो किया जा रहा है, और आप एज एन एसोसिएशन जितने आपके मेंबर्स हैं उनके साथ ये यकीनी प्रैक्टिस कैसे बना रहे हैं सो दैट वी स्टे कोविड कंप्लायंट? देखें, कोविड ने पूरी हमारी इंडस्ट्री को बाकी दुनिया की तरह हिला दिया था, तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि जब हम वापस आ रहे हैं, इन बिटवीन भी हम काम कर रहे थे, हम एसओपीज को फॉलो करें. इसके लिए हम बार बार उनको मीडिया के जरिए या बाकी और चीजों मीटिंग्स में हम उनको याद दहानी कराते रहते हैं, क्योंकि दिस इज देयर ब्रेड एंड बटर. तो इसको अर्न करने के लिए ऑब्वियसली उन्हें इंडस्ट्री में सरवाइव करना है, तो SOPs पे अमल जरूर करना होगा. Right. And in a time when you're already so badly hit when it comes to the economic conditions, Nayana, do you feel that have you also taken that into cognizance, and the offerings of your institutions, are they full price? Have you slashed prices? Have you made it more affordable for young stylists to come and actually learn from you? We have made it very affordable in price, language, and the practical aspect of it. We have also given our we promote the diploma programs at the moment, but we can give it in units so that people can learn a unit, then make a little bit of earning earning some money and make some money, and they go in for the second unit. Sidra, we have a very big problem in our industry that we are handling human beings. It's a huge responsibility. So we are not handling computers and furniture. So we need to be very, very sure of our knowledge, our skin, our hair, the theory knowledge, and the health and safety, especially with COVID times. Yes. And we really need to spread the importance. It was already important, but spread it more now to take the safety precautions, health, safety and hygiene in the salon, so that we avoid COVID and we also treat our clients who are human beings in a proper manner. Very Absolutely. important. Nayana, one last question. We often worry about, as clients, we worry about our health. A lot of the salons and beauticians, they're very encouraging, they're very reassuring that, of course, the SOPs are followed in their salons, and the priority that they highlight is, of course, the client's safety and their health. But what about their own workers and their team members? We often see these girls working long hours, and more importantly, they're handling, chemicals and various treatments at such a regular pace that it can be very harmful for their own respiratory and their own health. So do you think the salon owners are cognizant of this? I don't know how it works in Pakistan, but it is very, very important for us, and we promote, we actually give all the rules and regulations and all the packs that the entire world has, from PPE, personal protective equipment. It's absolutely necessary for the salon workers, and the employer should provide it. Absolutely. Health and safety, as you say, long hours, the standing, the shoes, and also customer safety.
everybody is worried about COVID, the customer, but they are more worried about, we should be worried about our staff, because we have to work on intimate space. We can't do anything on personal space. True, So very our true. staff- And this is one service that you cannot really replicate. I mean, this is such a personal service that Yes. you definitely need to visit the salon. Thank you so much, Nayana, and thank you so much, Farah जी, कि आप यहाँ पे मौजूद थे. कई अहम चीज़ों के बारे में बात हुई. वैसे भी पूरी दुनिया फाइनेंशियल इंक्लूजन का जिक्र करती है खवातीन के लिए. ये एक ऐसी फील्ड है जो कल्चरली, सोशली एक्सेप्टेबल भी है, और इससे आप अच्छी रेवेन्यू, अच्छी इनकम कमा सकती हैं. लेकिन अहम बात यह है कि सैलून ओनर्स अपनी टीम्स का ख्याल रखें. उनके लिए लॉन्ग वर्किंग आवर्स नहीं होने चाहिए. सिर्फ कोविड ही नहीं, मुख्तलिफ केमिकल ट्रीटमेंट्स जब ये हेयर ड्रेसर्स कर रही होती हैं, उनका रेगुलर कितना एक्सपोजर है, एंड इज देयर हेल्थ बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड? दीज आर क्वेश्चंस दैट द इंडस्ट्री मस्ट आस्क देमसेल्व्स. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. इसी के साथ जी हम बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ. वील बी राइट बैक. जी जनाब, एज इज जस्ट अ नंबर, ये हम बार बार आपसे कहते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट लाइफ, टू बी ऑल द इयर्स एंड वीक्स दैट यू हैव, मेक द मोस्ट ऑफ इट. कई लोग ये कहते हैं कि जी आप अपनी उम्र को ज्यादा अपने जहन पे सवार कर लेते हैं. कल ही मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जी मैंने अपनी फ्रेंड से कंप्लेन किया कि मेरे घुटनों में दर्द हो रही है, और उनकी उम्र इस वक्त 28 है. तो उन्होंने कहा हाँ बेटा, 30 के बाद तो ये बड़ा कॉमन है. बट आपको मिलाते हैं आज एक बड़ी ही जबरदस्त शख्सियत से, जिन्होंने 61 साल की उम्र में, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, 61 इयर्स की इनकी एज है, और तकरीबन 7 साल पहले यानी 2015 में हाजी फरोश खान साहब ने साइकिलिंग शुरू की थी. और ये उस वक्त पीक टाइम था जब हम देखते हैं कि दहशतगर्दी के वाकयात थे, अनसेफ तस्वुर किया जाता था, खुसूसन अगर बलूचिस्तान की बात की जाए. लेकिन इन्होंने हाल ही में एक नया रिकॉर्ड बनाया है. इन्होंने सवाबी से लेके क्वेटा का सफर सिर्फ 11 दिन में साइकिल के जरिए कवर किया है, जो कि 938 किलोमीटर्स बनता है. अस्सलाम वालेकुम फरोश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए. मुझे ये बताइए कि आम लोगों का तस्वुर है कि स्पोर्ट्स और खासतौर पर साइकिलिंग और इस तरह का कोई भी एडवेंचर ये यंग एज के लोगों की बातें हैं. आपने कैसे फैसला किया, माशाल्लाह यू 60 एंड अबव, कि आप इस सफर पे निकलेंगे? मैं सबसे पहले बेटा आपके टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल दोनों का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे कराची में बेहतरीन वेलकम किया, और साथ ही पाकिस्तान के उन अवाम का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जो 2015 से मेरे मिशन में मेरा साथ दे रहे हैं, और आज मैं इस मकाम तक पहुँच गया हूँ. बेटा अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मेरा ताल्लुक सवाबी के एक छोटे से कस्बे छोटा लाहौर से है, और 2015 से मैंने एक जो मिशन शुरू किया तो मेरा ये था कि मैं हज के लिए जाऊंगा, और उसकी एक प्रैक्टिस के अंदाज से शुरू किया था. लेकिन 2016 में मेरे कजन प्रोफेसर हामिद हुसैन शहीद की बादशाह खान यूनिवर्सिटी में एक दहशतगर्द हमले में डेथ हो गई, और उसके बाद मैंने पाकिस्तान का पुरअमन पीसफुल चेहरा दुनिया को दिखाने के लिए एक पुरअमन जदोजहद का आगाज किया, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज 6-7 सालों पे मुहित हो गया. इसमें मैंने अभी तक तकरीबन 19,000 किलोमीटर का सफ़र जो मेरे पास रिकॉर्ड पे मौजूद है वो मैं कर चुका हूँ, और पाकिस्तानी अवाम का पैगाम दुनिया को बताने के लिए कि देखो ये पाकिस्तान के लोग हैं जिसमें हाजी खान फरोश बगैर किसी सिक्योरिटी के चल रहा है, और अपने मुल्क को अमन की बात करता है, अपने जवानों को मोहब्बत की बात कर रहा है. तो ये है मेरा पाकिस्तान. मेरा पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं है. इन काविशों के जरिए बड़ा अहम पैगाम लोगों तक पहुंचता है. लेकिन मुझे बताइए कि सफर में कोई मुश्किलात आपको पेश आती, क्योंकि जो इलाके जिनका आप जिक्र कर रहे हैं 19,000 किलोमीटर, एक तो अपने आप में एक बहुत बड़ा फासला है. दूसरा ये कि क्वेटा, कोहार, डेरा इस्माइल खान, जोब का इलाका, इसके अलावा किला सैफुल्ला, यानी यहाँ पे सबसे पहला सवाल तो लोगों के जहन में आता है कि कितना आसान है. अगर सड़कें पगडंडियां बनी हुई भी हों तो क्या आपको आसानी से, अगर आप सफर कर रहे हैं, खाने पीने का सामान मिल जाता है, कहीं सुस्ताने की जगह मिल जाती है? इस बारे में हमें बताइए. क्यों नहीं बेटा, जिन इलाकों का आपने जिक्र किया इसमें वाकई तकलीफ तो है, लेकिन कुछ न कुछ बेहतरी है. लेकिन मैंने तो बेटा जी गिलगित साइड पे भी सफर किए. मैं शंजू टाप से, चतराल से होके गया हूँ, जहाँ पे आबादी का नामो निशान भी नहीं है. सही. लेकिन मुझे वहाँ पर भी रोडों पे आने वाले सयाहों से मदद मिलती रही,
اور میری ہر جگہ تمام ضروریات کا وہ خیال کرتے رہے. صحیح. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے گھر والوں نے کتنا ساتھ دیا جب آپ نے ان کے ساتھ شیئر کیا ہوگا؟ پہلے تو انہوں نے کہا ہوگا کہ چلے جی حج کی تیاری چل رہی ہے تو اس کے لیے فزیکل ٹریننگ تھوڑی سی ہو رہی ہے، لیکن جب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کا ایک چہرہ اور اس کا ایک پرامن طریقہ ہے وہ دوسروں کو بتایا جائے، تو اس میں انہوں نے ساتھ دیا آپ کا؟ میں بیٹا کہہ دوں کہ میرا گھر والوں نے بالکل ساتھ نہیں دیا تھا، بلکہ اب ان کی رضامندی نیم رضامندی ہے. صحیح. لیکن میں آج آپ کے توسط سے اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی بچوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ میری اس کرب کو محسوس کرتے ہوئے بھی میرا ساتھ دے رہے ہیں، مجبوراً دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے کوئی پریشانی نہیں دی ہے. اور بالخصوص میرے تمام رشتہ دار جو میرے اس پل پل کی گھڑی میں میرے ساتھ ہوتے ہیں، میں ان کا آج آپ کے توسط سے شکریہ ادا کر رہا ہوں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے حاجی فروز، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک زبردست فزیکلی انہوں نے اپنے آپ کو اسٹرانگ بھی کیا ہے. پاکستان کا ایک پرامن جو امپریشن ہے اس کو دنیا بھر میں اجاگر کرنے کے لیے بھی کوششیں کر رہے ہیں. وی وش یو آل دا ہیلتھ اینڈ سکسیس ان یور فیوچر انڈیورز. لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک.